Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha Ji. We are studying the class 10 science and here we begin with the chapter 12 that is magnetic effects of electric current. तो ये बहुत ही important chapter है as far as exams are concerned. तो हम इसे in one go complete करेंगे. All the concepts, all the questions, all the back exercises, everything we are going to complete in one go. So if you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel Learn with Nisha Ji for regular video upload updates. See, हमने previous chapter में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के videos अगर आपने नहीं देखे हैं I'll post the link to the videos. Okay, you can watch them. Okay, तो उसमें हमने पढ़ा था एक heating effects of electric current. ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के. उसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट के और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ये हम थोड़ा सा देखते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर जो होती है, ओके, इट एक्चुअली बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, राइट. तो वी विल सी एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. ठीक है, नाउ इन दिस एक्टिविटी व्हाट वी आर डूइंग, टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर and place it between the points x and y in an electric circuit. ठीक है, as shown in the figure. तो ये एक हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें देखो एक बैटरी लगी हुई है. दिस इज एमीटर यूज्ड टू मेजर द करंट. रेजिस्टर इज एडेड. ओके, यहाँ पे हमने थिक कॉपर वायर लगाई है, स्ट्रेट है ये एक्स वाई. ओके, तो दिस इज अटैच टू दिस सर्किट. दिस इज अ स्विच. नाउ द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. तो ये हमने एक पेपर लिया है तो इसके परपेंडिकुलर है ये, राइट. Horizontally, place a small compass near to this copper wire. See the position of its needle. एक छोटी सी compass रख दी इस पेपर पे. ओके, तो इसकी पोजीशन हमें चेक करनी है. Now we insert the key into the plug. ये स्विच हमने क्लोज किया. We pass the current through the circuit. तो इसमें से करंट पास होगा. We have to observe the change in the position of the compass needle. ठीक है, ये चेक करना है. So we see that needle is deflected. तो इसका क्या मीनिंग है? It means that electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. तो एक magnetic effect भी produce कर सकता है electric current, right? So we say that electricity and magnetism, they are linked to each other. Okay. Now, what about the reverse possibility, electric effect of moving magnets? Okay. So in this chapter, we will study magnetic fields and such electromagnetic effects, right? We will study about electromagnets, which involve the magnetic field effect of electric current. Okay, so ये सब हम इसमें study करें. So next is magnetic field and field lines. Now we are familiar with the fact that a compass needle gets deflected when it is brought near a bar magnet. तो आप एक bar magnet लो, एक छोटा सा magnet होता है, उसके पास compass needle लो तो वो deflect होती है. You can check it in the laboratory, right? So a compass needle is in fact a small bar magnet. Okay, वो आप खुद ही एक bar magnet होता है. Ends of the compass needle point approximately towards north and south directions. ठीक है, by default north south directions में होता है. And pointing towards the north is called north seeking or north pole. Okay, the other end that points towards south, it is called south seeking or south pole. तो दो poles होते हैं इसमें, north and south pole. Now, through various activities, we have observed that like poles repel. एक जैसे जो poles होंगे वो repel करेंगे. मतलब north और north pole repel करेंगे, south और south pole repel करेंगे. And unlike poles of magnets attract each other. जैसे north और south pole will attract each other. Okay? So this is a basic concept. Now here's a small question. Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? ऐसा क्यों होता है? Let's try to understand. जैसे सपोज आप मान के चलो ये एक छोटा सा बार मैग्नेट है, ठीक है, और आप यहाँ पे कंपास नीडल ले आए, ठीक है. तो इस बार मैग्नेट के भी पोल्स होते हैं. लेट्स से दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. तो इसकी नीडल इनिशियली जिस भी डायरेक्शन में थी, ठीक है, लेट्स से सपोज पहले वो ऐसे थी, तो यहाँ लेट्स से इसका साउथ पोल था और इसका नॉर्थ पोल था. तो आपको पता है सेम पोल्स हैं, सेम लाइक पोल्स विल रिपेल ईच अदर. तो ये साउथ इससे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इससे दूर चला जाएगा, ठीक है, इसलिए ये नीडल मूव कर जाएगी. ओके, तो क्यों कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है? क्योंकि और लाइक पोल्स विल रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स या अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो उसकी वजह से वो एक अपनी ऐसी पोजीशन सेट कर लेगा जिसमें कि
साउथ की तरफ नॉर्थ पोल आ जाएगा और साउथ से साउथ पोल रिपेल्ड हो जाएगा, राइट। नाउ दिस वन इज अ वेरी गुड एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आप लैब में भी परफॉर्म कर सकते हो, राइट। So it says fix a sheet of white paper on a drawing board using some adhesive material. ठीक है, एक white sheet A4 sheet paper आप ले सकते हो, उसे आपने drawing board पे रख दिया। Now place a bar magnet on the center of it. Center में ऐसे हमने bar magnet रख दिया, ठीक है। Sprinkle some iron filings uniformly around the bar magnet. ठीक है। तो आयरन फाइलिंग्स बहुत छोटे छोटे आयरन मींस डॉट्स की तरह होते हैं। एक जैसे आप सॉल्ट स्प्रिंकल करते हो ना, ऐसे उसे आप स्प्रिंकल कर सकते हो लाइक यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। ओके, नाउ टैप द बोर्ड जेंटली, हल्का टैप करना है आपको। नाउ यू हैव टू सी द ऑब्जर्वेशंस। So what you see, iron filings near the bar magnet align themselves along the field lines. आपको इस तरह के कुछ पैटर्न नजर आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये सारी आयरन फाइलिंग्स ने पैटर्न्स बना लिए, अलाइन कर लिया अपने आप को along the field lines. Okay. So iron filings arrange themselves in a pattern as shown. Okay. Now, why do the iron filings arrange in such a pattern? What does this pattern demonstrate? So we can see this magnet, it exerts its influence in the region surrounding it. Okay. So therefore the iron filings experience a force. Now the force thus exerted makes iron filings to arrange in a pattern, and the region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected, it is said to have a magnetic field. ठीक है, तो ये magnetic field है इसके around. Okay. Lines along which the iron filings align themselves represent magnetic field lines. तो ये सारी magnetic field lines है इसमें. Okay. Now, are there other ways of obtaining magnetic field lines around a bar magnet? Yes, we can draw the field lines of a bar magnet. We can draw them, right? So here's a small activity. You take a small compass and a bar magnet. तो आपने एक small compass ले ली. Okay, this small compass and a bar magnet. इसका देखो pole कैसे है, यहाँ north pole है, यहाँ south pole है. Right? So we are drawing a magnetic field line with the help of a compass needle. Now place the magnet on a sheet of white paper fixed on a drawing board using some adhesive material. Okay. Mark the boundary of the magnet. Magnet की boundary आप pencil से mark कर सकते हो. Okay. Place the compass near the north pole of the magnet. How does it behave? तो आप यहाँ पे place करोगे अगर, okay, क्या behavior होना चाहिए? South इधर आ जाएगा north की तरफ. Unlike poles attract each other, north इससे away face करने लग जाएगा. ठीक है, तो साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. ऑब्वियसली ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा. ओके, सो यू मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड्स ऑफ द नीडल. तो नीडल की जो पोजीशन है उसके आप दो डॉट्स मार्क कर दो. नाउ मूव द नीडल टू अ न्यू पोजीशन सच दैट इट्स साउथ पोल ऑक्यूपाइज द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय इट्स नॉर्थ पोल. तो यहाँ पे हमने प्लेस करा सेम पैटर्न पे. ठीक है, हम ये करते रहेंगे कब तक, जब तक हम यहाँ पे नहीं पहुंच जाते साउथ एंड पे. ठीक, नाउ वी जॉइन द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द पेपर बाय अ स्मूथ कर्व. दिस कर्व रिप्रेजेंट्स अ फील्ड लाइन. तो ये बेसिकली डायरेक्शन शो कर देगा हमें. ठीक है, वी रिपीट द अबव प्रोसीजर एंड ड्रॉ एज मेनी लाइंस. ओके, these lines like represent the magnetic field around the magnet and are called magnetic field lines. तो फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट यू कैन सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ड्रॉ करने के लिए आता है एग्जाम में. इसमें आपको देखो ऑब्जर्व करना है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ इनकी डायरेक्शन है. ठीक है, अपवर्ड्स भी हैं, ये डाउनवर्ड्स भी हैं, और यहाँ पे देखो साउथ में एंटर कर रही है और नॉर्थ से इमिनेट कर रही है. ओके, नाउ the deflection increases as the needle is moved towards the poles. पोल्स के पास आते आते डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. आप देख सकते हो. ठीक है, डायरेक्शन इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट. ओके, it is taken by convention that the field lines emerge from north pole and merge at south pole. ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. Inside the magnet, direction of field lines is from south pole to north pole. अगर अंदर हम देखें. Okay, so magnetic field lines are closed curves. Okay, now strength of relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of field lines. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो दूर दूर है field lines और पोल के पास बहुत नियर बाय है.
ठीक है, तो यहाँ stronger है, तो field is stronger, that is force acting on the pole of another magnet placed is greater where the field lines are crowded. Okay, now no two field lines are found to cross each other, कहीं भी cross नहीं होती है. If they did, it would mean that at the point of intersection the compass needle will point in two directions, but ये तो possible नहीं है, वो तो एक ही direction में point करेगी, right? So this is a very important question as far as exams are concerned. फील्ड लाइंस ड्रॉ करना अराउंड बार मैग्नेट और उनका स्मॉल डिस्क्रिप्शन, राइट. नेक्स्ट वी सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट. So in activity 12.1 we have seen that an electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it. Now in order to find the direction of the field produced, let us repeat this activity in this way. So this is a simple electric circuit in which a straight copper wire is placed parallel to and over a compass needle. Okay, so this is the copper wire. Okay. Now deflection in the needle becomes opposite when the direction of the current is reversed. तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी नीडल. अब हमने बैटरी को ऑपोजिट कर दिया, अब ऐसे मूव कर रहा है करंट, तो हमारी जो डिफ्लेक्शन है नीडल की वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी. जैसे पहले अगर इधर नॉर्थ और इधर साउथ था, तो अब इधर नॉर्थ और इधर साउथ हो जाएगा, राइट. तो एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. We take a long straight copper wire, 2 or 3 cells of 1.5 volts each and a plug key. Connect all of them in series as shown here, right? Place the straight wire parallel to and over a compass needle, like this you are placing. Plug the key in the circuit, on kar diya switch. Observe the direction of deflection of the north pole of the needle. Now, if current flows from north to south, यहाँ हमारा नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ हमारा करंट फ्लो कर रहा है. ओके, नाउ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड मूव टुवर्ड्स द ईस्ट. तो नॉर्थ पोल हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, ईस्ट में. ओके, नाउ वी रिप्लेस द सेल कनेक्शंस एज इन द सर्किट. कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ बैटरी की पोलैरिटी ऑपोजिट कर दी. ठीक है, बैटरी को ऑपोजिट वे में कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले. Now this would result in the change of the direction of current through the copper wire. Current की direction opposite हो गई, अब south to north जा रहा है current like this. Okay. Now we observe the change in the direction of the deflection of the needle. अब क्या होगा, needle opposite direction में move करेगी towards the west. पहले east direction में थी, अब west direction में है, right? So it means that the direction of magnetic field produced by electric current is also reversed. तो अगर आप करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाती है, राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. ओके, नाउ व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट थ्रू अ कंडक्टर. Does the pattern depend on the shape of the conductor? This we are going to investigate by this activity. तो अगर हम कोई भी चीज किसी एक्टिविटी के थ्रू स्टडी करते हैं और कुछ रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं, तो वो चीजें हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं और रिटेन हो जाती हैं. सो दैट इज व्हाई इन साइंस वी प्रेफर लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, राइट. So we shall first consider the pattern of the magnetic field around a straight conductor carrying current, right? So what we do, we take a 12 volt battery. तो अभी थोड़ी ज्यादा वोल्टेज ली है हमने. A variable resistance, उसको हम क्या कहते हैं, रियोस्टैट. इसमें क्या होता है, हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा करेंगे. ओके, एन एमीटर. So here is your battery, here is your rheostat or variable resistance. Here is your ammeter. Ammeter 0 to 5 ampere का मीनिंग क्या है कि ये करंट मेजर कर सकता है from 0 to 5 amperes range. Okay. A plug key, this K is the plug key. Connecting wires, these are the connecting wires, and a long straight thick copper wire. ये जो brown color से shown है, this is our copper wire. Okay. Now insert the thick wire through the center, normal to the plane of a rectangular cardboard. ये हमने एक rectangular cardboard लिया और इसके through ये penetrate कर रही है. Okay. Now take care that the cardboard is fixed and does not slide up and down. Cardboard को fix होना चाहिए. That we have to make sure. Okay, now connect the copper wire vertically between the points X and Y as shown in series with battery, plug, key, everything.
नाउ अभी जो कार्डबोर्ड है वी हैव टू स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड. जो हमने बार मैग्नेट के टाइम यूज की थी ना वैसी ही हमें आयरन फाइलिंग्स लेनी है. ओके. नाउ कीप द वेरिएबल ऑफ द रियोस्टेट एट अ फिक्स्ड पोजीशन एंड नोट द करंट थ्रू द एमीटर. एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वैल्यू पे हम करंट नोट करेंगे. नाउ close the key so that a current flows through the wire. Ensure that the copper wire placed between points X and Y remains vertically straight. ये copper wire straight रहनी चाहिए. ठीक है, perpendicular to cardboard. और अब current pass करना start कर दिया. Now gently tap the cardboard a few times. You observe the pattern of the iron filings. तो iron filings कैसे होती हैं इसमें? They will form a pattern of concentric circles around the copper wire. इस तरह से concentric circles इसके बन जाएंगे around the copper wire. अब ये concentric circles क्या represent कर रहे हैं? They are representing the magnetic field lines. Okay. So how can the direction of magnetic field be found? We place a compass at a point P, let's say, over a circle. Observe the direction of the needle. Direction of north pole of the compass needle will give the direction of field lines produced by the electric current through the straight wire at point P. So you can show the direction by an arrow. तो इस केस में आप देख सकते हो it's clockwise. Clockwise direction में हमारी magnetic field lines. Now another thing is, does the direction of magnetic field lines get reversed if the direction of current through the straight copper wire is reversed? We have to check it. तो उसमें हम क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट करने के लिए बैटरी को ऑपोजिट तरीके से कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे. तो फिर क्या होगा? सेम कंसेंट्रिक लाइंस ही बनेगी, बट जब आप इसकी डायरेक्शन चेक करोगे तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी. अभी क्लॉकवाइज थी तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी. राइट. So we are seeing a pattern of concentric circles indicating the field lines of a magnetic field around a straight conducting wire. Arrows in the circles, they show the direction of the field lines, and here is a close-up of the pattern obtained. Right. Now what happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? अगर हम current को थोड़ा कम या ज़्यादा करते हैं, that we need to check. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? Current we will vary in the wire. Okay. Now we find that the deflection in the needle also changes. ठीक है. अब करंट कैसे चेंज करोगे? रियोस्टेट के थ्रू. वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करो, करंट चेंज हो जाएगा. ठीक है. करंट इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगी. ओके. इट इंडिकेट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस. ठीक है. Now another thing is, what happens to the deflection of the needle if the compass is moved away from the copper wire but the current through the wire remains the same? करंट सेम रहेगा बट हम इस सेंट्रल पॉइंट से इसको दूर ले गए मैग्नेटिक कंपास को. राइट. तो क्या होगा? नाउ प्लेस द कंपास एट अ फार्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर. जैसे हमने पॉइंट क्यू पे रख दिया सपोज. तो हम क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे? वी विल ऑब्जर्व दैट डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेस. ओके. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर विल डिक्रीज as the distance from it decreases. तो जितना दूर जाएंगे इस कंडक्टर से वो हमारी डिफ्लेक्शन कम होती जाएगी. Right. Now the concentric circles representing the magnetic field around the current carrying straight wire becomes larger and larger as we move away from it. Okay. तो concentric circles बड़े होते जाएंगे. Obviously radius बढ़ेगा तो concentric circles का radius बढ़ रहा है. Okay. So this is the way we understand the magnetic field due to current through a straight conductor. So now let us study the right hand thumb rule. ये बहुत important topic है from the exam point of view, right? तो आप इस diagram से इसे बहुत ही easily समझ सकते हो. How we do this? We have to find the direction of magnetic field associated with the current carrying conductor. ठीक है. तो ये जो ब्राउन कलर का करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा, ओके, हम इसके अराउंड अपने राइट हैंड को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और थंब किस डायरेक्शन में जाएगा हमारा? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है. तो जब हमारा थंब उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां पे करंट फ्लो कर रहा है और फिर आप उस कंडक्टर को होल्ड करोगे, तो जिस डायरेक्शन में आपकी 4 फिंगर्स टर्न हो रही हैं
that is going to give you the direction of the magnetic field, right? So imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current. Then the fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field. Okay, this is known as right hand thumb rule. और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं. ओके, सपोज वी आर ड्राइविंग अ कॉर्कस्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉर्कस्क्रू इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, या तो डायरेक्टली आपसे स्टेटमेंट पूछेंगे राइट हैंड थंब रूल की, या मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, कुछ भी पूछ सकते हैं. सेकेंड थिंग इज इसको अप्लाई करके किसी गिवन प्रॉब्लम में डायरेक्शन फाइंड आउट करना मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों तरह से पूछा जा सकता है, राइट? सो लेट्स सी दिस एग्जांपल. करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट है, तो इसी डायग्राम में हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम इट्स नॉट एक्चुअल, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में करंट जा रहा है. ठीक है, now we are asked what is the direction of magnetic field at a point directly below it and at a point directly above it. Okay, so current is in east-west direction. Applying this right-hand thumb rule, we get the magnetic field at any point below or above the wire turns clockwise in a plane perpendicular to the wire when viewed from the east. आप देखो ईस्ट से देखो, ऊपर से इसमें देखोगे तो आपको ये डायरेक्शन नजर आ रही है, तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और इसी तरह आप लोअर एंड से देखोगे, वेस्ट एंड से, तो आपको क्या डायरेक्शन नजर आएगी, ऐसे. तो वेस्ट नीचे से अगर आप देखोगे तो वो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा. ओके, सो दिस वे बोथ वेज यू गेट द डायरेक्शन, ऊपर से क्लॉकवाइज दिखेगा और नीचे से एंटी क्लॉकवाइज. So here are three conceptual questions based on the things we learnt in the previous parts. First is draw magnetic field lines around a bar magnet. ये मैंने आपको बताया था, जो डायग्राम हमने किया था, आपको वो डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके. सेकंड इज लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जब हमने बार मैग्नेट वाला केस डीप में स्टडी किया था, सारी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, यू कैन लिस्ट देम वन बाय वन. थर्ड इज व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. ये भी हमने देखा है, इसलिए नहीं इंटरसेक्ट होंगी जैसे आप अज्यूम करो कि इंटरसेक्ट हों. ओके, तो यहाँ पे अगर आप प्लेस करोगे योर कंपास, मैग्नेटिक कंपास प्लेस करोगे, तो जो नीडल है वो दो डायरेक्शंस में मींस जानी चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना, नीडल तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी. सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट हैव टू इंटरसेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट? नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप. अब हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और उसके थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखनी है. सो दिस इज द लूप लाइक this circle is formed, right? So we have so far observed the pattern of magnetic lines produced around a current carrying straight wire. ठीक है, suppose the straight wire is bent to form a circular loop and current is passed through it. So how would the magnetic field lines look like? That we are going to understand. Now we know that the magnetic field produced by a current carrying straight wire depends inversely on the distance from it. इसका क्या मतलब है कहने का, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, वायर से हम दूर जाएंगे, वैसे वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी. ओके, इनवर्स रिलेशन इसको कहते हैं. सो सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, the concentric circles representing the magnetic field around it would become larger and larger. ठीक है, बड़े होते जाएंगे वो as we move away from the wire. Now, by the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of these big circles would appear as straight lines. आप देख सकते हो, देखो टॉप पे यहाँ पे हमारे छोटे छोटे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, फिर थोड़े बड़े रेडियस के सर्कल्स बनने स्टार्ट हो गए. ओके, और सेंटर पे आते आते इतना बड़ा रेडियस हो गया कि वो एक स्ट्रेट लाइन ही बन गई. ओके, नाउ these appear as straight lines. This is what we are seeing. Okay. Now every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight lines at the center of the loop. तो बिल्कुल center of the loop से straight line जाएगी. Okay. Now by applying the right hand thumb rule, it is easy to check that every section of the wire contributes the magnetic field lines in the same direction within the loop. Okay. तो लेट से करंट हमारा ऐसे पास कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो ये ऐसे करंट की डायरेक्शन है, राइट?
तो आप राइट हैंड रूल लगाओगे अगर, तो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे हमारी ऐसे होगी, ऑपोजिट है। यहाँ पे S to N like this and this way it's going above and downwards. तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये भी हमें ड्रॉ करने आनी चाहिए और 3-4 पॉइंट्स इसके हमें एक्सप्लेन करने आने चाहिए, राइट? So we know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point, it depends directly on the current passing through it. जैसे करंट अगर बढ़ेगा करंट कैरिंग वायर के थ्रू, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, उसी रेशियो में बढ़ता है। ओके, नाउ इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स, अभी तो हमने एक सिंगल टर्न लिया था सर्कुलर कॉइल का, अब n टर्न्स है, मे बी 100 टर्न्स कर दिए हमने, तो field produced is n times as large as that produced by a single turn. जैसे पहले सपोज हमारी x यूनिट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी सिंगल टर्न से, और अब हम 10 टर्न्स डाल देते हैं उसमें, तो 10x हो जाएगी, राइट? This is because the current in each circular turn has the same direction and the field due to each turn then just adds up. तो वो एड अप हो जाएगी और हमें इफेक्टिवली ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगी, राइट? नाउ लेट अस डू अ स्मॉल एक्टिविटी. We take a rectangular cardboard having two holes. Okay, these are the two holes. Insert a circular coil having large number of turns through them, normally like to the plane of the cardboard. इससे perpendicular होने चाहिए. Okay. Now connect the ends of the coil in series with a battery, a key and a rheostat. ये rheostat है, ये key है, ठीक है? Now we sprinkle iron filings uniformly on the cardboard. यहाँ पे iron filings sprinkle कर दी. Plug the key. Okay. Tap the cardboard gently a few times. Now note the pattern of the iron filings that emerges on the cardboard. ये हमें नोटिस करना है. तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल है. कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? इसके बिल्कुल पास में कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, फिर इसका रेडियस बढ़ता गया और बीच में स्ट्रेट लाइन. तो ये हम एक्टिविटी के थ्रू ही चेक कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड. ओके, अब सोलेनॉइड क्या होता है? A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. आपको डिजाइन से ज्यादा क्लियर होगा. जैसे देखो ये वायर है, हमने इसको ऐसे ऐसे रोल कर दिया एक सिलेंडर शेप के अंदर, ठीक है? तो ये हमारा सोलेनॉइड बन जाता है. Now pattern of the magnetic field lines around a current carrying solenoid is shown in the figure 12.10. देखो हमने क्या किया, सोलेनॉइड के एंड पॉइंट्स वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिए. एक की है के स्विच की तरह एक्ट करेगा और एक बैटरी, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है. तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह बनती हैं. देखो अगर करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसे है तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, ये साउथ पोल बनेगा, और आप देख सकते हो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, ठीक है? यहाँ नॉर्थ से मर्ज हो रही हैं और साउथ में आके एंड हो रही हैं, ठीक है? और इनसाइड कैसे होंगी? साउथ टू नॉर्थ. तो आपको ये देखने में कैसा लग रहा है पैटर्न? अगर आप बार मैग्नेट वाला याद करो, कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है, वैसा ही है ये थोड़ा. ओके, सो दिस इज द वे सोलेनॉइड वर्क्स. और सोलेनॉइड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सोलेनॉइड पे आता ही है क्वेश्चन. ओके, तो इसको ध्यान से हमें करना है. Now, they are also saying compare the pattern of the field with the magnetic field around a bar magnet. Similar है? Yes, they are similar. In fact, one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole, while the other behaves as the south pole. तो field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. ठीक है, parallel straight lines हैं. This indicates that the magnetic field is the same at all the points inside the solenoid, right? तो inside the solenoid field is uniform रहेगी. Okay. Now, a strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. तो हम यहाँ पे देखो अभी तो एयर है, इसके अंदर कुछ नहीं है. ये जो सर्कल्स हैं इनके बीच में जो सिलेंड्रिकल शेप है, यहाँ पे अगर हम सपोज सॉफ्ट आयरन इंसर्ट कर दें या कोई और मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दें
तो जब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे हैवी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो उसको मैग्नेटाइज कर देगी और एक मैग्नेट बना देगी। तो जो मैग्नेट वो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में? इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी क्वेश्चन पुट अप होता है, लाइक व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो दिस वे वी कैन फॉर्म इट। तो इस डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा। दिस डायग्राम शोज अ करंट कैरिंग सोलेनोइडल कॉइल। ये कॉइल है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ स्टील रॉड इनसाइड इट। ये स्टील रॉड आपने इंसर्ट कर दी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, ठीक है। So here are some conceptual questions. Let's understand them. First is, consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. Okay. Let the current pass through the loop clockwise. Okay. So let's try to draw that. Table पे रखा हुआ है. Let's assume that जो laptop की हमारी screen है, that is a table surface. ठीक है. तो उस पे हम इसको draw करते हैं. Circular loop है. इस तरह से होगा कुछ. पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हमने इसके बना दिए। ओके, नाउ करंट इज like flowing through this loop in clockwise direction like this. Now we have to apply the right hand rule to find out the direction of magnetic field inside and outside the loop. Okay, so inside the loop how the magnetic field is going to act, and outside the loop that we have to do. So let's say हम suppose इस point पे अप्लाई करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो हाउ इट्स गोइंग टू बी, यहाँ पे इस तरह से एक कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा हमारा, ठीक है। एंड कंसेंट्रिक सर्कल की हमारी डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, राइट। तो हर जगह लूप में इस तरह कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और फिर मिडल से क्या होगा, मिडल से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, दैट वुड बी द थिंग। और टेबल के परपेंडिकुलर जाएगी वो स्ट्रेट लाइन। ओके, लाइक सपोज टेबल इज केप्ट हॉरिजॉन्टली, तो वो हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड वन। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। यूनिफॉर्म होने का मतलब ऐसे स्ट्रेट आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है। जैसे हमने बोला था सोलेनॉइड के इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो वहां पे कैसी थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इस तरह से थी ना, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस थी। तो दिस वे यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, राइट। नेक्स्ट इज वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, व्हाट इट इज अभी हमने देखी थी, इट इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स, यूनिफॉर्म होती है। तो स्ट्रेट लाइंस होती हैं पैरेलल टू वन अनदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ओके, सो दिस वे यू कैन आंसर। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें आप सोलेनॉइड का एग्जांपल देके ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हो, और सर्कुलर रूप वाले एग्जांपल में हमारे पास डायग्राम्स हैं या एक्टिविटीज के थ्रू वो आप डायग्राम बना सकते हो। So here is another very important concept, that is force on a current carrying conductor in a magnetic field. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, और उसको फर्दर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो अब उस पे एक फोर्स लगेगा, तो वो कैसे लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो सब हम अभी स्टडी करेंगे, राइट। So we have learnt that an electric current flowing through a conductor, it produces a magnetic field. ये तो हमें पता है, okay? Now the field so produced, it exerts a force on a magnet placed in the vicinity of the conductor. Okay? ये force लगा सकता है, क्योंकि जैसे आप देखते हो जो हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है, हम वो रखते हैं तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट होती है, तो वो क्यों होती है, उस पर कुछ फोर्स लगता है, दैट्स वाई। ओके, now, French scientist Andre Marie Ampere, he suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor. तो yes, obviously, आपको पता है forces में reaction action वाला जो concept होता है, if there is an action, there is an equal and opposite reaction also. तो yes, magnet is also going to exert some force. So force due to a magnetic field acting on a current carrying conductor, it can be demonstrated by the help of an activity. तो अब हम एक activity करेंगे
जिसके थ्रू हम इस फिनोमेना को बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं. So let's take a small aluminium rod AB of about 5 centimeter. Okay, ये हमने aluminium rod ली है AB. Now using two connecting wires we suspend it horizontally from a stand. तो ये हमारा stand है. तो हमने two connecting wires लिए हैं इस तरह. We are hanging it like this. Fine. Now place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles with the magnetic field directed upwards. तो ये एक स्पेशल टाइप का मैग्नेट होता है. दिस इज हॉर्सशू मैग्नेट. ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है. हमें इसी डायरेक्शन में इसको प्लेस करना है और इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर रॉड. ओके. Now for this put the north pole of the magnet vertically below. Okay, north pole vertically below and south pole vertically above the aluminium rod. That's it. Now connect the aluminium rod in series with a battery key and rheostat. तो ये हमने कनेक्शन कर दिए. की है, बैटरी है, रियोस्टैट यहाँ पे इस तरह कनेक्ट कर दिया. राइट. Now pass the current through the aluminium rod from end B to end A. तो हमने बैटरी ऐसे ही कनेक्ट की है कि B से A में हमारा इस तरह डायरेक्शन हो करंट की. राइट. पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना करंट. Now what do you observe? It is observed that the rod is displaced towards the left. रॉड ना एक मूवमेंट शो करेगी towards the left side. ओके. तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली आपको शो होगी क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट होता है. तो इस पे फोर्स आपको क्लियरली नजर आ जाएगी. अब आपको क्या करना है? रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड. बैटरी को चेंज कर देंगे ऑपोजिट, पॉजिटिव हेयर नेगेटिव हेयर ऐसे करके, और फिर आप करंट ऐसे फ्लो करेगा. तो अब क्या आप ऑब्जर्व करोगे? डिस्प्लेसमेंट होगी रॉड की बट टुवर्ड्स द राइट. ओके. करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट करने से फोर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो गई है. राइट. Now a current carrying rod is shown here AB. It experiences a force perpendicular to its length, okay, and the magnetic field. Now support for the magnet is not shown here for simplicity. हाँ, इसको भी हम किसी support के through ही रखेंगे. Right. Now displacement of the rod in the above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminium rod when it is placed in a magnetic field. Okay. और क्या हम इसमें देख सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड. ओके. अब एक और छोटा चेंज करें अगर. नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय इंटरचेंजिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट. अब नॉर्थ पोल ऊपर कर दें और साउथ पोल नीचे कर दें. सो अगेन फोर्स हमारी रिवर्स होगी. ओके. सो दिस शोज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर. इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल. दोनों पे. Now experiments have shown that the displacement of the rod is the largest. Okay, maximum force कब apply होता है? When the direction of current is at right angles to the direction of magnetic field. ठीक है, कि अगर करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसे है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ऐसे 90 डिग्री पे होना चाहिए. ठीक है. In such a condition, we can use the simple rule to find out the direction of the force on the conductor. ठीक है. जैसे एक करंट है और एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स से, तो जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ. ठीक है. जैसे ये सपोज वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. तो एक एक्स के अराउंड है, एक वाई के अराउंड है, तो जो हमारा थर्ड होगा वो जेड के अराउंड होगा. ओके. इन एक्टिविटी 12.7 हमने जो कंसिडर किया था डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे वर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. और हमने देखा कि फोर्स परपेंडिकुलर टू बोथ था. ओके. नाउ द थ्री डायरेक्शंस वी कैन इलस्ट्रेट थ्रू अ सिंपल रूल. इस रूल को कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. जैसे हमें लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स लेनी है जैसे डायग्राम में शोन है. ओके. अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, forefinger and the middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. तीनों आपस में perpendicular होने चाहिए. right. अगर first finger it points in the direction of magnetic field, okay, and second finger in the direction of current, then thumb will point in the direction of motion or the force acting on the conductor. ठीक है. ये field है, ये current है, तो ये motion या force है.
तो इसको आप एक्सेस के थ्रू भी दिखा सकते हो. ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट. नाउ अब कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें लाइक करंट कैरिंग कंडक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड्स यूज होती हैं, जो आप डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हो. तो दीज आर इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. इनमें यही कंसेप्ट हमारे यूज होते हैं. ओके. Next we come on to example 12.2. So it is an objective question. An electron enters a magnetic field at right angles to it. ठीक है, ये magnetic field की direction है और electron इस तरह enter हो रहा है. Okay. Now direction of force acting on the electron will be, हम क्या करेंगे, again हम Fleming's left hand rule लगाएंगे, right. तो magnetic field की ये direction है. Okay. So direction of force is perpendicular to the direction of magnetic field and current. Okay. Now इलेक्ट्रॉन के मोशन की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन हमेशा हम उससे ऑपोजिट लेते हैं. ओके. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर राइट साइड है, करंट किस साइड है, अपवर्ड्स. तो अभी जो हमारा डायग्राम बनेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अपवर्ड्स. ओके. This is the direction of the magnetic field, and now we have to find the direction of force. तो अगर हम अपनी फिंगर्स को इसी पोजीशन में रखें तो हमारी सेकंड फिंगर अपवर्ड्स पॉइंट करेगी. ओके. और हमारी फर्स्ट फिंगर राइट साइड पॉइंट करेगी. तो आप चेक कर सकते हो आपका थंब कहाँ पॉइंट करेगा, into the page. Okay. तो direction of force is given by thumb. So it will be into the page. This way we have to take it. So here are some conceptual questions related to concepts we studied right now. First is objective type. Like which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? Okay. There may be more than one correct answer. All right. Mass. See, mass of the proton, it is intrinsic property. It cannot change, okay, in the magnetic field. So first one is not correct. Okay. Second is speed. Okay. So magnetic field does not work on the proton. ठीक है, तो इसकी speed it's not going to change. Speed उतनी ही रहेगी. Velocity, yes, velocity change होगी क्योंकि velocity में magnitude होता है plus direction होती है. Okay. तो direction of motion can change due to magnetic force. Okay. Then momentum, yes, momentum can change. Momentum क्या होता है, mass into velocity. तो जब velocity में change आ रहा है तो momentum में भी change आ सकता है. तो C and D are the correct options for the first question, right? Now let's come on to the second one. In activity 12.7, how do you think the displacement of the rod will be affected if, so we are given three conditions. First is current in the rod is increased. Current increase होगा, see, जो फोर्स होता है वो हमारा करंट के साथ इंक्रीज करेगा. ठीक है, करंट इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी. ओके. सेकंड इज हॉर्सशू मैग्नेट स्ट्रॉन्गर हो अगर, ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी फोर्स इंक्रीज होगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड बढ़ेगी. ओके. थर्ड इज लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीज्ड. यस, लेंथ भी अगर इंक्रीज होगी तो हमारा फोर्स बढ़ेगा, लार्जर फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी. राइट. तो तीनों ही केसेस में इट विल इंक्रीज. ओके. सो दिस कंप्लीट्स द सेकंड वन. नेक्स्ट इज द थर्ड वन. इट्स एन ऑब्जेक्टिव अगेन. A positively charged particle, alpha particle, positively charged है, it is projected towards west. Okay, it is deflected towards north by a magnetic field. Okay, now the direction of magnetic field is, this is asked to us. तो एक बार हम directions लिख लेते हैं. Let's say this is north, this is south, and this is east, and this is west. Okay. So हमें क्या बोला है, पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट. ओके. तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ये है. पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन विल बी सेम.
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए उसके केस में ऑपोजिट होता है. ओके, फिर हमें क्या गिवन है, इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. तो फोर्स इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है और इस डायरेक्शन में हमारा करंट है. दिस इज गिवन टू अस. नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अननोन. तो ये इस डायरेक्शन में, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी ना. तो टुवर्ड्स साउथ होगी नहीं, टुवर्ड्स ईस्ट होगी नो. ठीक है, सो इट विल बी आइदर डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स. तो अब आप ये कैसे डिटरमाइन करोगे, यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, तो आप लेफ्ट हैंड से तीनों टू फिंगर्स और थंब के थ्रू डायरेक्शन बनाओगे. थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, एंड अकॉर्डिंगली बाकी फिंगर्स की जब आप डायरेक्शन देखोगे तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी अपवर्ड, दैट इज outwards towards us from the paper, right? So this is the way we complete this. Now let us understand the domestic electric circuits. Okay, in our homes we receive supply of electrical power through a main supply, जिसे हम mains बोलते हैं. Okay, it is either supported through overhead electric poles or by underground cables. तो अभी ज़्यादा इंडिया में ट्रेंड है अभी इलेक्ट्रिक पोल्स का ही है. Okay, now one of the wires in this supply usually with red insulation cover, उसको हम बोलते हैं live wire और positive. Another wire with black insulation is called neutral wire or negative. So in our country, India में क्या है, potential difference between the two is 220 volts. Okay. Now at the meter board in the house, these wires pass into an electricity meter through a main fuse. एक fuse use होता है, right? Now through the main switch, they are connected to the line wires of the house. Okay. These wires supply electricity to separate circuits within the house. नाउ इसमें क्या है, हम दो सेपरेट सर्किट्स यूज करते हैं. एक होता है 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेस ऑफ हायर पावर रेटिंग्स, जैसे गीजर्स हैं, एयर कूलर्स हैं, एटसेट्रा. ओके, अदर सर्किट इज 5 एम्पियर करंट रेटिंग, जो कि बल्ब्स, फैंस एटसेट्रा छोटी डिवाइसेस के लिए होता है. ओके, नाउ एक अर्थ वायर होती है, इट हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर. इट इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द house. Okay, so this is used as a safety measure, especially for those appliances that have a metallic body, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, टोस्टर है, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर. ओके, इन सब के लिए हम एज अ सेफ्टी मेजर इसे यूज करते हैं. तो जो मेटालिक बॉडी है, इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर. इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट. So it ensures that any leakage of the current to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of the ground या earth, and the user may not get a severe electric shock. ठीक है, तो metallic part पे ऐसा कोई current रहता नहीं है, तो वो उसको bypass कर देता है. Okay, so this is as a safety measure for the homes. Now, in figure 12.15, we see a schematic of one of the common domestic circuits. ठीक है, in each separate circuit, different appliances can be connected across the live and neutral wires. Okay. Now, each appliance has a separate switch to on off the flow of current through it. ठीक है. Now, in order that each appliance has equal potential difference, they are connected parallel to each other. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, जनरली गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है ये, कि आपके जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं, घर में जो सर्किट्स होते हैं, उसमें कनेक्शन सीरीज में होता है या पैरेलल में. तो इट इज इन पैरेलल, राइट. तो आप इसमें देख सकते हो, जो रेड है वो लाइव वायर है. ठीक है, ये लाइव वायर यहाँ गई, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज, न्यूट्रल ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस, फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर के थ्रू गई दोनों वायर्स, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इसमें मेन स्विच और फ्यूज होते हैं फॉर ईच सर्किट. ठीक है, इसके थ्रू अब हर जगह जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट हो गया हर स्विच से. अब हर स्विच में एक थर्ड सॉकेट होता है जहां पे अर्थ वायर कनेक्ट होती है, ग्रीन कलर की है ये. ओके, तो बेसिकली 3 वायर्स हो गई हमारी. Next one is electric fuse. Electric fuse is an important component of all domestic circuits. ठीक है, हम ऑलरेडी फ्यूज का प्रिंसिपल और वर्किंग देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में. अगर आपने वो चैप्टर की वीडियो नहीं देखी, जस्ट गो थ्रू दैट ऑल्सो, राइट.
तो fuse in a circuit it prevents damage to the appliances and circuit due to overloading. ठीक है, ओवरलोडिंग कब हो जाती है? कई बार ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसा फॉल्ट हो जाता है जिसकी वजह से लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट. तो ये कब आकर हो सकता है? जब इंसुलेशन ऑफ वायर्स डैमेज हो जाए, ओल्ड हो जाए काफी, या किसी अप्लायंस का ही फॉल्ट हो, इंटरनली कुछ उसमें शॉर्ट हो जाए. ओके, तो इन सच ए सिचुएशन करंट इन द सर्किट बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग. Now, use of electric fuse, it prevents the electric current and the appliance from a possible damage by stopping the flow of unduly high electric current. ठीक है. Now, joule heating that takes place in the fuse, it will melt it to break the electric circuit. Circuit ही break हो जाएगा. Okay. Now, overloading can also occur due to an accidental hike in the supply voltage. कि पीछे से supply voltage ही एकदम से बहुत heavy आ गई. So sometimes overloading is caused by connecting too many appliances to a single socket. कि आपने बहुत सारे devices means divider use करके और एक ही socket में लगा दी, तो भी आपकी overloading हो सकती है. तो it can happen due to multiple reasons, but उसको हमें avoid करना आना चाहिए, that we are doing it using a electric fuse, right? So here come 3 conceptual questions based on the concepts we have studied right now. Okay, so let's answer them one by one. First one is, name 2 safety measures commonly used in electric circuits and appliances. So you can write first one is fuse. Okay, fuse अभी हमने देखा है, it is a safety device that will protect the electrical circuits from excessive current by melting and breaking the circuit when the current exceeds a safe level. ठीक है, ओवरलोडिंग के केस में इट हेल्प्स आउट. और सेकंड आप लिख सकते हो सर्किट ब्रेकर्स. ठीक है, सर्किट ब्रेकर्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं. दे ऑटोमेटिकली इंटरप्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन देयर इज अ फॉल्ट. इट विल प्रिवेंट डैमेज एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर और इलेक्ट्रिक शॉक. तो 2 ऑप्शंस आप दे सकते हो इसमें, फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर्स. ओके, नाउ next is a numerical type question. An electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electric circuit 220 volt. It has a current rating of 5 amperes. Now, what result do you expect? Explain. तो बेसिकली हम इसमें पावर का फॉर्मूला लगा देते हैं. पावर क्या होता है हमारा? पावर इज बेसिकली V into I. ओके, वोल्टेज इंटू करंट. ओके, नाउ अगर हम यहाँ से करंट निकालें तो करंट क्या हो जाएगा? P बाय V. ठीक है, P कितना गिवन है हमें? 2 किलोवाट्स. तो 2 किलोवाट्स को वॉट्स में कन्वर्ट कर दो, 2000 हो जाएगा. ठीक है, अपॉन V. V इज 220. तो इसमें करंट कितना आ रहा है? इस वैल्यू के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली आपका 9 एम्पियर्स के अराउंड आएगा. ठीक है, 9.1 के अराउंड. और हमें करंट रेटिंग कितनी गिवन है? 5 एम्पियर्स. तो करंट रेटिंग 5 एम्पियर्स है और हमारा क्या रहा है आंसर? 9 एम्पियर्स. ओके, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इट विल मे बी ब्लो द फ्यूज और ट्रिप द सर्किट ब्रेकर इफ इट इज प्रेजेंट. ठीक है, तो ओवरलोडिंग हो जाएगी सर्किट की. इट कैन रिजल्ट इन ओवरहीटिंग एंड इट कैन पोटेंशियली कॉज डैमेज और फायर अगर कोई सेफ्टी मेजर नहीं है. ठीक है, और अगर सेफ्टी मेजर जैसे फ्यूज लगा हुआ है तो दैट फ्यूज विल गो ऑफ. राइट, दिस यू कैन एक्सप्लेन. Now, next comes the third question. It says, what precautions should be taken to avoid overloading in domestic electrical circuits? बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इस चैप्टर का आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि घर में आप क्या प्रिकॉशंस यूज कर सकते हो. First is, we should avoid connecting too many high power appliances to a single circuit simultaneously. ठीक है, ऐसा करना हमें avoid करना चाहिए. Second is, proper wiring should be used with adequate current rating for the expected load. ठीक है, proper wire use करो. We should ensure that the circuit is protected by correctly rated fuse or circuit breaker. All right. Then we should regularly check for any damaged wires and replace them promptly. ठीक है, and we should use appliances within their recommended power limits and specifications. जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि करंट एक्सीड कर रहा है, तो दिस वे इट शुड नॉट हैपन. राइट, सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस. So here is the summary of the chapter. ये सब अभी हमने पढ़ा है. Okay, let's go through.
First is a compass needle is a small magnet. Okay, its one end which points towards north is called North Pole and which points towards south is called South Pole. Okay. Second is a magnetic field exists in the region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected. Right. Third is field lines are used to represent a magnetic field. Field line क्या होता है? It is the path along which a hypothetical free north pole would tend to move. Direction of the magnetic field at a point is given by the direction that a north pole placed at that point would take, and field lines are shown closer together when the magnetic field is greater, right? Next is a metallic wire carrying an electric current has associated with it a magnetic field, and the field lines about the wire consist of a series of concentric circles whose direction is given by right hand rule, right? Next is the pattern of magnetic field around a conductor due to an electric current flowing through it depends on the shape of the conductor. Magnetic field of a solenoid carrying a current is similar to that of a bar magnet. ये हम देख चुके हैं. Then electromagnet consists of a core of soft iron wrapped around with a coil of insulated copper wire. Okay. Next is a current carrying conductor when placed in a magnetic field, it experiences a force. If the direction of the field and that of the current are mutually perpendicular to each other, then the force acting on the conductor will be perpendicular to both. और हम उसे कौन सा रूल यूज करके देते हैं? Fleming's left hand rule. Then in our houses we receive AC electric power of 220 volt. Frequency कितनी होती है? 50 hertz. Now, one of the wires in this supply has red insulation, उसे हम live wire कहते हैं. One with a black insulation, that is neutral wire. Okay. Potential difference between the two is 220 volts. Third is earth wire, उसकी green insulation होती है. It is connected to a metallic body deep inside the earth. It is used as a safety measure to ensure that any leakage of current to a metallic body does not give any severe shock to a user. Okay. Last is fuse is the most important safety device used to protect the circuits during short circuiting or overloading of the circuits, right? So here are the exercise questions. We cover them one by one. First is, which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? Okay. So if you read the options, it is the field consists of concentric circles centered on the wire. ये हम already देख चुके हैं, right? Second is, at the time of short circuit, the current in the circuit क्या होता है? It increases heavily. बहुत ज़्यादा current flow करने लग जाता है, right? Third is, state whether the following statements are true or false. The field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight lines. Yes, obviously this is true. ठीक है, first statement हमारी true है. Second is, a wire with a green insulation is usually the live wire. No, this is false. ठीक है, ये गलत है. Green वाला कौन सा होता है? It is the earth wire. ठीक है, और live wire का color क्या होगा? It will be red in color. So here is the fourth question. List two methods of producing magnetic fields. Okay, one is you can use a current carrying conductor. ठीक है, जैसे आप straight wire use कर लो, solenoid use कर लो. Okay. एंड सेकेंड इज यू कैन यूज अ परमानेंट मैग्नेट ऑल्सो. ठीक है, एक मैग्नेट आपने प्लेस कर दिया, जैसे आपने हॉर्स शू मैग्नेट लिया था एक एक्टिविटी में, तो उसके अराउंड एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, राइट. सेकेंड इज व्हेन द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट. ठीक है, लार्जेस्ट कब होगा वो? जब हमारा कंडक्टर इट्स प्लेस्ड एट अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है कंडक्टर में से, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब हमारा फोर्स मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, राइट. नेक्स्ट इज, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेम्बर विद योर बैक टू वन wall. Okay, an electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. Okay, तो बेसिकली जो फोर्स लगा है वो आपके राइट साइड में लगा है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बैक ऑफ वॉल टू फ्रंट ऑफ वॉल, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रंट वॉल टुवर्ड्स बैक वॉल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना नेगेटिवली चार्ज्ड है. तो आपको बेसिकली करंट की डायरेक्शन पता चल गई. ओके, एंड यू नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो. आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है.
So you will use the Fleming's left hand rule for this. और जब आप point करोगे इस तरीके से thumb को force की direction में, right? और बाकी 2 fingers को current और magnetic field की direction में, तो आपकी जो magnetic field की direction आएगी that will be vertically downwards. Okay? आप करके देख सकते हो, vertically downwards आएगी magnetic field की direction. Right? Now, next is 7th question. State the rule used to determine the direction of, first part is magnetic field produced around a straight current carrying conductor. ठीक है, इसमें आप क्या यूज करोगे? You will use right hand thumb rule. Okay. Second is force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it. तो इसमें आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे. ओके, तीनों की डायरेक्शन को चेक करने के लिए. नेक्स्ट इज करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज द फ्लेमिंग्स रूल अगेन फॉर दिस वन. राइट. नेक्स्ट इज द 8th क्वेश्चन. इट सेज व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर. ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है? When the live wire and neutral wire they will come into direct contact due to damaged insulation or faulty wiring. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? हैवी करंट फ्लो करने लगता है सर्किट में, which can lead to overheating and fire hazard also. Now we come on to the last question, that is 9th one. What is the function of an earth wire? ठीक है, अर्थ वायर का क्या फंक्शन होता है? इट प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर लीकेज करंट टू फ्लो इनटू द ग्राउंड एंड इट एंश्योर्स दैट एनी अप्लायंस डज नॉट बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. किसी को शॉक ना लगे. ठीक है. देन व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस? इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक्स इन केस ऑफ इंसुलेशन फेलियर और करंट लीकेज. एक तो ये है, और सेकेंड है इट एंश्योर्स सेफ्टी बाय डायरेक्टिंग एक्सेस करंट अवे फ्रॉम द अप्लायंस एंड द यूजर. राइट. So this completes our chapter. If you have any doubts, you can post it in the comment section. I will be glad to answer that. And if you have not subscribed the channel, you can subscribe the channel, Learn with Nisha ji, to get regular updates and get very good marks in your subjects. Thanks for watching and stay tuned.